नमस्कार दोस्तों, हर संडे की तरह आज फिर से आपके साथ जुड़ चुका हूँ। मैं कुछ ना कुछ आपको बताने की कोशिश करता हूँ। लॉजिक ये रहता है कि आपको आपके बैंक के परिचालन में उसका कुछ सहयोग मिले, उसका कुछ एडवांटेज मिले। मेरा ये मानना है कि हर साल दिसंबर में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया पूरा बैंकिंग का एक एनालिसिस निकालती है, जिसको कहा जाता है ट्रेंड्स एंड एनालिसिस रिपोर्ट। वो काफ़ी सारे स्टैटिस्टिकल डेटा होता है और पूरा बैंकिंग सिस्टम जो है देश का, वो उसमें कवर किया जाता है। राइट फ्रॉम कमर्शियल बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, रूरल कोऑपरेटिव्स, अर्बन कोऑपरेटिव्स, everybody, including NBFC, and the chapters are dedicated. This year's report was published by Reserve Bank of India somewhere in the month of December. The report is available on the website. I find that many of the urban cooperative banks don't pay much attention to these reports. Hitherto, until recently, say up to 2016-17, Reserve Bank of India was writing hardly a paragraph or two about the urban cooperative banks. But then, past 2-3 years, Reserve Bank of India has been writing a dedicated chapter on developments in cooperative banks. Now, this is a particular chapter in this year's report from page number 95 to page number 116. Of course, this covers the entire cooperative gamut that exists in India. Our focus, our intention will be to understand and analyze on the basis of the data that is contained in this report about the urban cooperative banks. I am not going to talk about the rural cooperatives or the state cooperatives or DCCBs, because that is not the purpose of this particular channel. The purpose is to help urban cooperative banks in improving the management of their bank and understand the horizon where the sector is moving and how Reserve Bank of India looks to this particular sector. I mean, a lot of indications, implicit indications, and reading between the lines will enable you to understand how to read this report. Forget about the tables, because tables are there for the purpose of giving information to the stakeholders. But then tables are required to be analyzed and interpreted, and that's what I'm going to do for you. मेरा ये मानना है कि इस रिपोर्ट में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ expressed its frustration in a very different way. How Reserve Bank of India has expressed this frustration, if you read these 15-16 pages, you will come to know. But there is one word Reserve Bank of India has used in the entire report in its very first paragraph. That word, of course, I am going to talk about that word also as to why this word has been used by Reserve Bank of India. Overall, let me tell you the chapter that is written by Reserve Bank of India on development in cooperatives. You find that there is improvement. There is substantial improvement. And the improvement is further improvised when the Reserve Bank of India compares the data that is given in this report with the base year of 2005 and 2006 or 2015-16. Technically, this report is of a 1-year period, that is from March 21 to March 22. That's not the story. The numbers are being given with the base year of 2005-2006, which is logically not correct. Because you will find that Reserve Bank of India is trying to claim a credit for the improvement in the sector, that they have supervised the banks well and they have given proper regulations. Fine, they have done their part. But you as a urban cooperative bank holder or a stakeholder in urban cooperative bank, you have done wonderful job. Continue to do that. There is tremendous improvement in the overall sectorial numbers, and that improvement should continue. And I believe that March 23 report, when Reserve Bank of India prepares, which will of course be based on the March 23 number, the report will be out in December 23. This is a March 22 report that I am going to talk about, the numbers which the Reserve Bank of India has consolidated as of March 22. And based on this, of course, during the last 8 or 9 months, there have been a lot of improvements, a lot of additional regulations that have been issued, and these regulations have always in favor of the banks to enable them to perform better and improve better. There could be regulations where the urban cooperative banks don't like, but then it's in their interest that they have to comply with this. The opening paragraph of this, I'm going to refer to this particular report time and again.
one of the words, I mean, let's forget about the opening paragraph where they said that things have improved. Fine, you can read that and get that. Fantastic word that they have used is this: the Reserve Bank of India has improved on various parameters, but the worry or the constraints are still not gone, because there are issues in respect of shareholding patterns and constitutional provisions. Now, this is an area they are making an allusion that the constitutional provisions, जैसे वो 97th अमेंडमेंट एक्ट कैंसिल हो गया, या फिर BR एक्ट में 8 साल का प्रोविज़न आ गया डायरेक्टर्स के लिए, ऐसे कुछ लीगल इम्पीडिमेंट्स चल रहे हैं. और अभी मल्टी स्टेट बैंक के लिए अमेंडमेंट बिल जो लाया है उसमें भी कुछ इश्यूज आ रहे हैं. उसका ऑफकोर्स इसमें रेफरेंस नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि दीज लीगल हर्डल्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज रेफरिंग टू. एंड देन दे यूज अ सेंटेंस: the legal impediments and idiosyncratic, I mean, it's very difficult to pronounce also, idiosyncratic factors tend to hinder their expeditious resolution. अब ये idiosyncrasy आप अगर डिक्शनरी में जाओगे तो उसमें ये आता है कि जो स्ट्रेंज और अनयूजुअल हैबिट्स के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है. इंग्लिश हिंदी में जाओगे तो इसका मतलब इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी में लिखा गया है सनकी. सनकी यानी जिसको सनक आता है, जिसका बैलेंस खो चुका है, जो बैलेंस में नहीं है, और जिसको हम कहते हैं ना कि इरेशनल. तो ये वर्ड इन्होंने यूज़ किया है कि जो लीगल इम्पेडिमेंट्स है एंड इडियोसिंक्रेटिक फैक्टर्स. What are the idiosyncratic factors? Because we are heterogeneous. Now, if we are heterogeneous and Reserve Bank of India is talking about idiosyncrasies, doesn't go well. Definitely doesn't go well. I mean, it would have been better that some different word could have been used. Having said that, the analysis is basically ensures that we as a sector have done good things. And Reserve Bank of India claims that the regulatory support and statutory reforms has enabled the sector to improve. So be it, we have no issues on that. Regulation is a critical part, but then the regulation has to touch the ground reality. There are many regulations which are not touching the ground realities. I am not going to talk on the regulatory aspect for the simple reason there are enough organizations which are talking about it. My focus will be on this particular report that is now available on the website, and I am also not going to talk about the structure that Reserve Bank of India typically reproduces every year. So that is fine. As far as the structure is concerned, we need not talk about it. The good news is that we have 1,514 urban cooperative banks as of March 22. So that's a good number. And the Reserve Bank of India admits that the urban cooperative banks are trying to do business of commercial banks. There's an indirect allusion that has been made. Then Reserve Bank of India also makes a fantastic observation. What is the observation that they are making? Let us understand. They are saying that 19.5% consolidated balance sheet in 2005 is down to 10.3%. और अगर ये आप 18, 19, 20 साल का ऐसा कंपैरेटिव डेटा दोगे तो yes, it is going down. But that cannot be the purpose to be reported here. The share is shrinking, and who is responsible? Who is responsible? आपको कहा गया है आप भागो दौड़ो, और अगर आपके पैरों में अलग तरह की अगर दिक्कतें डाली जाएं तो मुझे नहीं लगता है हमारा शेयर बढ़ने वाला है. So there is a necessity to have a relook at this data. The current balance sheet, consolidated balance sheet is 10% is what the Reserve Bank of India is talking about. और एक चीज़ उन्होंने कही है कि 9 नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स वॉलंटरी मर्ज किए गए पिछले साल 21-22 में, यानी और 2005 साल से 2004-05 से लेकर के आज तक 22 तक 145 मर्जर हुए हैं. पिछले साल रिजर्व बैंक ने 10 अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लाइसेंस कैंसिल कर दिए.
और अब तक 54 बैंकों के लाइसेंस वो कैंसिल कर चुके हैं 15-16 के बाद में। दैट इज़ ड्यूरिंग द लास्ट 6 or 7 years ऑलमोस्ट 54 बैंक्स लाइसेंस हैव बीन कैंसल्ड एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस जो नंबर्स गेम जो दिख रहा है वो घटते हुए जा रहा है, रिड्यूस होते जा रहा है। इसमें जो बेस लिया गया है, डेटा एनालिसिस का जो बेस लिया गया है, वो बेस है टायर 1 और टायर 2 बैंक्स। वो टायर 1 टायर 2 का बैंक जो पुराना वाला था 2008-9 के बाद चल ही रहा था, वो क्या था, बैंक्स अंडर 100 crores एंड बैंक्स अबव 100 crores। That is now changed this year. That is 22-23. That is changed, and Reserve Bank of India has made a 4-tier structure. We all know that. So the data doesn't help. But then, if you look at the data, you will find that Tier 1, Tier 2 banks almost have a 50% number game. अगर वो 100 crore के बेस के ऊपर आप पकड़ते हैं, तो you have 813 banks in Tier 1 and 701 banks in Tier 2. अगर आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आप देखेंगे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की, नॉट अ गुड नंबर टू टॉक अबाउट। दे हैव डीग्रोन, एंटायर सेक्टर हैज डीग्रोन फ्रॉम March 21 to March 22, and the degrowth is deposits have been reduced by 0.6% and advances have been reduced by 0.2%. Same numbers, same analysis is appearing for the income and other issues as well, where the numbers have gone down. I'm not going to give any reason in terms of the happenings of COVID and all those things. Those are all gone. Size wise deposits, और इसके बारे में हम लोग अगर ये कहेंगे तो almost 195 बैंक्स जो 500 करोड़ के ऊपर है, वो लगभग 70% तक का बिजनेस करती हैं। ये जो पेज नंबर 101 पे जो डेटा एनालिसिस दिया है, वो डेटा एनालिसिस में थोड़ा स्प्लिट करना चाहता हूँ, और वो नया जो टायर 1 कैपिटल का डेटा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसमें ऐसा लगता है, based on the numbers as of March 22 and the tier classification that has come subsequently, there are 829 Tier 1 banks in the country now. There are 490 banks in Tier 2 now, and Tier 3 and Tier 4 only 195 banks. इसका मतलब ये है कि मैं ये जो वीडियो बनाता हूँ Tier 1 Tier 2 बैंक के लिए, ये 1200 या 1300 के करीब ये टोटल बैंक्स आती है जिनके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। क्योंकि Tier 3 Tier 4 बैंक तो बड़े बैंक है, वो 200 बैंक है, तो वो 200 बैंकों को निकाल दो, 1200 के आसपास बैंक आ जाती हैं जिनके लिए हम ये वीडियो बनाते हैं। ये जो नया क्लासिफिकेशन है रिपोर्ट में नहीं है, लेकिन बेस्ड ऑन दी डिटेल्स that are available with us on the basis of regulatory guidelines, I am sharing that number. 2021-22 में 145 बैंकों को रिजर्व बैंक ने पेनलाइज किया, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को, रिपोर्ट में है। उसके पहले वाले साल में 43 बैंक्स, ज्योमेट्रिकल ऑलमोस्ट 300% राइज इन टर्म्स ऑफ पेनलाइजेशन। 43 बैंक्स को पेनल किया था 2021 में, 145 बैंक को पेनलाइज कर रहे हैं 2022 में। 22-23 में कितने होंगे आप सोच सकते हो, कितने होंगे? 60-70 तो ऐसे ही हो गए, क्योंकि वो धड़ल्ले से पेनल्टी कर रहे हैं। आपको दिख रहा है कि कहीं 10 बैंकों को पेनल्टी किया, कहीं 12 बैंकों को पेनल्टी किया। पिछले 9 महीने में तो यही अपने को देखने के लिए आ रहा है। मुझे ये नहीं पता है कि इसका एडवांटेज सेक्टर इम्प्रूवमेंट में होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पेनलाइजेशन एज ए टूल हैज़ बिकम blunt, its sharpness is gone. I mean, in various videos I have made a reference to that, and there is an interesting data that we need to interpret from our own latest angle. जो रेटिंग वाइज डिस्ट्रीब्यूशन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का है, उसमें ए रेटिंग में 153 बैंक्स, बी प्लस में 943 बैंक्स, सी में 343 और डी में 73। इसका मतलब है कि लगभग 400 के आसपास बैंक्स डिफ़िकल्टीज़ में है। सी वाले जो 343 बैंक्स के उनको बी में आना बहुत ज़रूरी है। वो अगर आते नहीं हैं तो वो डी में जा सकते हैं। तो दे हैव टू कीप ऑन इम्प्रूविंग। और CRAR वाइज मुझे लगता है कि पोजीशन इज़ एब्सोल्युटली कंफर्टेबल, क्योंकि लेस देन 9% CRAR सिर्फ 86 बैंक्स का है, और 41 बैंक्स ऐसी हैं कि जिनका CRAR
ये 12% के ऊपर है। इसका मतलब ये 9 और 12 के बीच में 1335 बैंकें हैं। दैट्स अ गुड साइन एज फार एज कैपिटल एडिक्वेसी इज कंसर्न। It's a good sign. They are ensuring that things are absolutely improving. Asset quality में भी काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट आ चुका है। उसमें ग्रॉस NPA सेक्टर के हो गए हैं 9.7%, नेट हो गए 4.4%। और ये 9.7% जब मैं बात करता हूँ पिछले साल यानी 2021 में ये 12% था। नेट NPA 2021 में 5.8% था, वो 4.4% आ गया। दिस इज़ all credit to the urban cooperative banks who have done wonderful work in the area of recovery. They should continue to do that. And then there is a fall in the total income of banks by at least 3.5%. हालांकि उसके सामने expenditure fall is around 6%. So that's how this situation has improved greatly. प्रायोरिटी सेक्टर के बारे में हम लोग कहते हैं कि हम लोग प्रायोरिटी सेक्टर कर नहीं पाते हैं। जो 40, 50, 60, 75 जो परसेंटेज दिया है, आप अगर रिजर्व बैंक को पूछोगे यार ये 60% बहुत हो रहा है, 75% बहुत हो रहा है, हम नहीं कर सकते। डेटा अलग बात कर रहा है। डेटा अलग इस तरह से बात कर रहा है कि आपको 2022 में 50% करना था और आपने 55% कर दिए सर। इसका मतलब ये है कि आप अगर प्रायोरिटी सेक्टर के बारे में रिलीफ मांगने जाओगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये टेबल आपके सामने रख देगा कि भाई 22 में आप अगर 55% करते हो तो 23 में 60% करने में क्या हर्ज है। और अगर जो कुछ गिने चुने बैंक कर नहीं पाते हैं, उन्हें अगर वो 2% इन्वेस्टमेंट वाला जो लफड़ा चल रहा है वो करने के लिए बोलते हैं, तो अगर सेक्टर का नंबर ये है और आप अगर कर नहीं पाए हो तो दैट्स अ केस ऑफ इंडिविजुअल बैंक, नॉट दैट ऑफ अ सेक्टर। इट्स वेरी डिफिकल्ट दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज गोइंग टू लिसन और bow down to it. Reserve Bank of India is not going to listen, is my view, despite the fact that NAFCB has written to the members as well as to the Reserve Bank of India that there is a need for consideration. मुझे लगता है कि रिजर्व बैंक सेक्टर का डेटा देख के बात करेगी और उसके लिए आपको ऑप्शंस निकालना बहुत कठिन हो जाएगा। सो दिस इज़ अबाउट दी ट्रेंड्स एंड एनालिसिस रिपोर्ट। रीड इट इन डिटेल बिकॉज देयर आर सेवरल कॉलम्स विच आई हैव नॉट इंटरप्रिटेड फॉर यू बिकॉज दे आर वेरी सिंपल। One table that they have placed to defend the priority sector norm, that is the fall in income if you attain a priority sector, the fall in income or the fall in profitability is 0.0005 or something like that. So that is insignificant. हमारा प्रायोरिटी सेक्टर से हमारा प्रॉफिट नहीं बढ़ता है, प्रायोरिटी सेक्टर से हम लोग लॉसेस करते हैं, ये अगर आप कहने वाले हो तो ये डेटा जो रिजर्व बैंक ने निकाला है वो डेटा से बात करेंगे। यू विल हैव टू इंश्योर दैट यू नीड टू पुट अप बिगर और बेटर आर्गुमेंट्स इन द एंटायर एरिया। मुझे लगता है कि ये रिपोर्ट आप सबने पढ़नी ज़रूरी है, हर साल की रिपोर्ट पढ़नी ज़रूरी है। आपने अगर नहीं पढ़ी हो तो जो मेन चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। आपको अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं आप इनको सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जितने भी कोऑपरेटिव बैंकिंग फ्रेंड्स हैं वो सबको ये शेयर कीजिएगा, बताइएगा। सवाल है तो सवाल पूछिएगा। मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं मेरा ईमेल आईडी देता हूँ, आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।